Hi guys, can you hear me? Am I audible loud and clear to everybody? Yes, sir. Hello? Yes sir. Hi. Sorry guys, काफ़ी वेट करना पड़ा आप लोगों को। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम आ रहा था टेक्निकल तो। सो जेई मेन का आज पेपर हो चुका है, राइट? फर्स्ट एंड सेकंड शिफ्ट बोथ आर कंप्लीटेड। एज फार एज अभी तक जो भी रिव्यूज बच्चों के आज तुम लोगों के किसी का एग्जाम था बाय द वे? जैनिल, अब्दुल्ला, जुहान, किसी का था आज एग्जाम? No, my one is at 28th. क्या? My one is at 28th. 28 किसी का आज एग्जाम था गाइस? एनीबडी? Yes, I had today. You had today, right? Okay. Yes, sir. So then you tell us first of all, because you are the one who can give the best review, right? How was the paper? Sir, it was like uh, Sorry? not easy, like easy to moderate level kind of paper. Easy to moderate level in which subject? Like overall paper you are saying? Yes, sir, overall. Previous year question papers. So again, repeat. Was it like the previous year question papers or it was a little different from that? No, sir, it was like physics was fine. Maths was Okay. comparatively, like compared to last year's, it was easier. And then Okay. chemistry was also like moderate level. Chemistry was Moderate. moderate. Okay. Got it. So maths was little bit easier as compared to last year, correct? Yes, sir. Okay. Yeah, as far as what review I have got to know also, the reviews seems the same. Okay. Even the question which we are going to discuss right now, same thing, right? Paper of maths was easier as compared to the previous years because we know कि last year तक maths काफी अच्छा आता था. But they have maintained the weightage. Okay. So what does that mean? So till the last year, what used to be the most weighted chapter in JEE main? Factor 3D. Okay. Almost 10 to 12%, 15% even sometimes the weightage was from these two chapters. This year also the weightage is given to these two chapters. Okay. And followed by that, the third most weighted chapter was matrices and determinants. Okay, this is how it used to be in the previous years as well. This year, what I got to know is basically there were more questions from differential equations. So earlier there used to be only one question from this chapter, but this time I think there were two or three questions even from this chapter, right? Okay, statistics there was one question again, and rest all the chapters are given almost same weightage in maths, the way it used to be in the previous year examinations, right? सिर्फ डिफरेंस ये है कि कुछ क्वेश्चंस काफी इजी थे मैथ्स के. ओके. लेकिन स्टिल एट द सेम टाइम व्हाट आई गॉट टू नो फ्रॉम द किड्स इज दैट केमिस्ट्री वाज लिटिल बिट लेंथियर, सो मेनी पीपल वर नॉट एबल टू रीच टू मैथ्स पेपर. मैथ्स में क्वेश्चन तो थे इजी, राइट? लेकिन व्हेन दे रीच टू मैथ्स सेक्शन दे ओनली हैड लाइक मे बी 40-45 मिनट्स लेफ्ट. ओके, सो वो ऐसा हो गया कि देयर वाज टाइम, यू कुड हैव अटेम्प्टेड, यू कुड हैव गॉट गुड मार्क्स, बट देन क्योंकि जनरली हमारे दिमाग में assumption होता है मैथ्स डिफिकल्ट आएगा, तो पहले फिजिक्स केमिस्ट्री इजी है, लेट्स सॉल्व देम. सो शायद कुछ लोगों का वहां पे रह के जो है इशू हुआ इस बार इन द फर्स्ट शिफ्ट एक्चुअली स्पेसिफिकली. जुबान, समथिंग लाइक दैट, एनीथिंग लाइक दैट व्हिच यू हैव ऑब्जर्व्ड इन योर पेपर? Yes, sir, it took time to reach maths. Exactly. So guys, without wasting your time, let's quickly discuss the papers, questions of this paper. Okay. और दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन व्हिच आई गॉट टू नो. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, मतलब ट्रिग्नोमेट्री से इतना इजी क्वेश्चन पूछने की एक्सपेक्टेशन नहीं थी जेई से. ओके. व्हाट यू कैन डू इज दैट cosec 10 को यू कैन पुट 1 by sin 10. ओके. एंड sec 10 को यू कैन पुट 1 by cos 10, right? ओके. यू कैन टेक द एलसीएम, यू विल गेट sin 10 cos 10. एलसीएम क्या, तो यहाँ पे आएगा गाइस cos 10 minus √3 sin 10. Correct. Now, what you can do is that basically you can divide the denominator by 2. So it becomes the formula of sine 2 theta, right? So I divided the denominator by 2 like this. And obviously I have to multiply here by 2 as well. And then I needed one more 2. So I multiplied actually by 4. So it became 1 by 10, 1 by 2 cos 10 minus √3 by 2 sin 10. Okay. Now, देखो डिनोमिनेटर में ये क्या बन जाएगा, साइन 2 थीटा विच इज साइन 20 डिग्रीज. न्यूमरेटर में आई कैन राइट 1 by 2 as cos 60. So cos 60 cos 20 minus sin 60, sorry, 10, my bad. Cos 60 cos 10 sin 60 sin 10, right guys? Are you able to understand so far? Yes, sir.
ओके हाँ 30 भी कर सकते हैं वैसे, यस 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 यू कैन डू दैट एज वेल। ओके साइन 30, ऐसा कुछ लोग शायद ऐसा भी कमेंट कर रहे हैं, तो मैं यही बता देता हूँ, यू कैन ऑल्सो राइट लाइक दैट, यू कैन राइट और 4 टाइम्स ऑफ साइन 30 कॉस 10, आई थिंक ये ज्यादा इजी होता, माइनस कॉस 30 साइन 10, ओके एंड देन होल डिवाइडेड बाय साइन 20, करेक्ट। ओके so now guys from this I'll get easy question है, 4 ये फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ओके and then divided by sin 20, sin 20 cancel, the answer is 4. Zohan, your paper was in morning shift or in the afternoon shift? Sir, morning. तो ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में था? Yes, sir. Okay, you attempted this one? Sir, no, sir. Okay, टाइम का इशू? ओके Yes, sir. नो प्रॉब्लम। तो गाइस ये इंपॉर्टेंट है, ये एस्पेक्ट हमें बहुत कंसीडर करना पड़ेगा एग्जाम में, दिस माइट हैपन कि टाइम ना मिल पाए हमें, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को, राइट? ओके वी कैन नोट इट डाउन, देन आई विल मूव टू द नेक्स्ट वन क्विकली। Okay, देखिए, so next question which I have is the question from matrices part. Okay, question is somewhat related to the adjoint property, adjoint of a cube minus adjoint of b cube determinant you have to find. Where a is actually काफी easy question लगा मुझे, because a is given to you, b is given to you, a and b both of them have only one variable, that is alpha and beta. Okay, which we can very easily find that particular variable, उसमें कोई ज्यादा difficulty नहीं होगी हमें. Okay, and in fact few people, if they remember the characteristic equation, okay, so I believe that जिस भी बैचेस में मैथ्स का डिस्कशन हुआ है इस चैप्टर का, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जरूर हुआ होगा, ओके राइट, जिसमें हम लोग क्या करते हैं अल्टीमेटली वी डू दिस दैट ए का हर मैट्रिक्स का एक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है, 2/2 का होगा तो इक्वेशन वुड बी ऑफ स्क्वायर में होगा, 3/3 का होगा तो इक्वेशन विल बी इन द क्यूब, राइट? ओके सो एवरी मैट्रिक्स हैज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, करेक्ट गाइस? तो यहाँ पे जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आएगी वो कैसे हम लोग फॉर्म करते थे, we used to do like that, a minus lambda I का determinant equal to 0, right? So I'll do that, a minus lambda I determinant, okay, and I'll equate it to 0, and then I'll replace lambda by a, right? First of all, if I find a minus lambda I का determinant, so you can see very easily it's lambda minus 1, sorry, alpha minus 1, 2 minus 1, minus 2, okay? So this will be guys alpha minus 1, sorry, alpha minus lambda आएगा ये, alpha minus lambda, 2 minus lambda, right? So alpha minus lambda, you can multiply quickly. So you will get 2 alpha minus 2 lambda minus lambda alpha plus lambda square minus 2, which is guys lambda square minus lambda, अगर कॉमन ले रहे हैं यहाँ से तो आएगा 2 plus alpha और plus 2 alpha minus 2. Now characteristic equation is what? If I replace lambda by a, so I'll get a square minus a times 2 plus alpha, okay, plus 2 alpha minus 2i, और यहाँ भी 2 अल्फा आई आएगा, विल बी इक्वल टू अ नल मैट्रिक्स, ऐसा कुछ बन जाता है, राइट? ओके सो फ्रॉम हियर वी कैन वेरी इजीली कंक्लूड कि जो अल्फा का वैल्यू है 2 के इक्वल होगा, व्हाई? बिकॉज आई एम कंपेयरिंग दिस डायरेक्टली विद दिस वन, है ना? तो देखो यहाँ पे ए के साथ क्या लिखा हुआ है, अल्फा प्लस 2, दैट शुड बी इक्वल टू 4, सो अल्फा का वैल्यू 2 आ जाएगा। इवन इफ आई कंपेयर द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट में आई के साथ 2 लिखा है यहाँ पे इन दिस, एंड हियर आई एम गेटिंग 2 अल्फा माइनस 2, सो यहाँ से भी अल्फा का वैल्यू 2 ही आएगा, राइट? सो अल्टीमेटली द वैल्यू ऑफ अल्फा इज 2, easy, yeah? Okay. Similarly, guys, I'll solve the characteristic equation for B and I'll get the value of beta as well, right? So look at this, what is it's gonna be? Beta minus lambda I determinant निकालते हैं। देखो characteristic equation किसी को नहीं आता तो मैं quickly repeat कर देता हूँ। First of all, you find the determinant of A minus lambda I. Okay. In that determinant, you replace lambda by A and that is called the characteristic equation and the value of that would be a null matrix. Okay. So B minus lambda I का determinant we are finding over here very quickly. And that would be guys 1 minus lambda into 1 minus lambda minus beta, correct? This would be guys lambda square minus 2 lambda plus 1 minus beta. Again, if I replace lambda by b, I'll get beta b square minus 2b plus I minus beta I will be a null matrix, right? Comparison करेंगे फिर से तो b square minus 2 beta is fine. B square minus
2b, ओके, ये वाला यहाँ से कंपेयर होगा. सो गाइज इट्स जस्ट i, सो इट सीम्स लाइक द वैल्यू ऑफ बीटा इज 0. करेक्ट? यहाँ तक कोई डाउट किसी को? बोलिए. नो सर. अल्फा बीटा दोनों आ गए तो बस ठीक है. अब तो क्या ही बचा क्वेश्चन में. ए क्या है? 2212 एंड बी क्या है? 1101. नाउ व्हाट दे आर आस्किंग a cube minus b cube. You can find a cube very easily. You can find b cube very easily. You can subtract these two determinants, these two matrices, and then you'll find the adjoint of that. But इसमें एक प्रॉपर्टी यूज होगी फिर आगे जाके adjoint की, कि adjoint of a cube minus b cube जो होगा गाइस का determinant, that would be determinant of a cube minus b cube की power n minus 1. Remember this property guys? Adjoint of a क्या होता है? Determinant of a power n minus 1. करेक्ट? Yes याद है sir. ना? हाँ, तो उसके बाद हमें ये यूज करना पड़ेगा. ओके, वैसे तो इसमें n का वैल्यू चूंकि 2 है तो 2 minus 1 1 ही हो जाएगा. तो इट्स गोना बी डायरेक्टली a cube minus b cube, राइट? अंडरस्टूड? Yes sir. Yes. ओके देन कूल. आई थिंक इसका आंसर वाज 121. ठीक है जवान, ये हुआ था. No, sir. अच्छा, अदर देन जवान एनीबॉडी एल्स हु हैड द पेपर टुडे? एनीवन? नोबडी? ओके, नो वरीज. But Zohan, this question was in the paper, right? At least you can confirm that, Yes, right? sir. It was there. Okay, good. Good. Perfect. हाँ जी, देखिए नेक्स्ट. एक बार उसका आंसर देख लेना. मे बी इट्स 11 और 121. करेक्ट, वो देखना अकॉर्डिंगली. तो ए क्यू बी क्यू सॉल्व करना पड़ेगा उसके, राइट? या हाँ, आंसर माइट बी 11. ओके, यस 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 यस. आई डिडंट सॉल्व इट कंप्लीटली, so maybe it is 11. So then So this it's one I 11, could- right? Okay, this one you could do. Okay, cool then. The next question was the question of differential equation, guys. Okay, where the question was 1 plus x square into dy 1 minus tan inverse x. किस तरह क्वेश्चन लगा आपको? तो इजी क्वेश्चन लग रहा है काफी ज्यादा. करेक्ट? क्योंकि देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म के बारे में हमने सुना है, राइट? दिस क्वेश्चन सीम्स लाइक द क्वेश्चन ऑफ वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म ओनली, इजंट इट गाइस? Yes sir. सो dy विल बी इक्वल टू, मैंने माइनस का मल्टीप्लाई किया tan इनवर्स x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. क्या बात है, तो लड्डू दे दिया जेई ने हमें ना. लड्डू पकड़ा दिया है तो हाथ में. सो गाइस इसका y हो जाएगा, दिस इज tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर. एक्चुअल में एक पार्ट ये है और एक पार्ट है dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, राइट? करेक्ट गाइस? यस और नो? Yes sir. So for this part, if you put tan inverse x as t, you'll get 1 upon 1 plus x square dx equal to dt. Okay. So guys, this part would be nothing but t dt, right? And ये तो already tan inverse x हो ही चुका है. तो t का आएगा t का आएगा t square by 2, t is tan inverse x. So y equal to tan inverse x whole square by 2 minus tan inverse x plus c. That's it. Understood? So, Mm-hmm. sir, I think there was a y somewhere in the question because I solved it by homogeneous. We have to Okay. put y's value also, right? नो एक्चुअली इसमें तो कहीं हमें y नहीं दिख रहा है, बाय द वे. ठीक है, क्वेश्चन में आप बोल रहे हो कि कहीं पे y भी था, दैट्स व्हाट यू आर सेइंग, राइट? Yes, sir. होमोजीनियस तो नहीं बन सकता है बिकॉज tan इनवर्स x गिवन है, राइट? तो Zohan, was there only one question from this chapter or there was more? So one or two were there. Okay, let's take the maybe वो other कोई question हो. Right, as far as the question which I got is this, okay, and if this was the question, then I think it was the very easy one. There was no need to do any homogeneous or something like that. It's a direct variable separable form, right? उसने बोला कि y0 equal to 1 है. So if x is 0, right, y is equal to 1, which means 1 is equal to c. c का वैल्यू 1 आ जाएगा. And then y1 will be equal to, guys, tan inverse 1. Tan inverse 1 is pi by 4. Pi by 4 का square is pi square by 16 into 32 minus then pi by 4 plus 1. This is the answer in that case, right? Correct? Yes sir. But guys, but still let me confirm. But जो question अभी तक मेरे पास आया था वो यही वाला आया था. उसके accordingly I have solved it, right? Correct? Yes sir. Okay, perfect. So भाई अभी तक कैसा लग रहा है आप लोगों को पेपर देखने में? मुझे तो लग रहा है कि आपने इससे बेटर सॉल्व किया है. लाइक इससे बेटर क्वेश्चन सॉल्व किए हैं आपने ऑलरेडी. Isn't it, guys?
व्हाट Yes, डू sir. थिंक? है ना? इससे बेटर आपने सॉल्व किए हैं ऑलरेडी. Yes, sir. Should I move to next one then? Okay. देखिए. Next one is guys 0 to pi by 2. Zuhan, can you just confirm this because अभी तो तुम्हें ही सारे questions confirm करने पड़ेंगे for us, right? Was this question in the paper, Zuhan? So I don't remember seeing this one. Okay, this one you don't remember. Okay, no problem. This is again, guys, one of the question which I have got was there in the paper, right? So let's try to understand this also. That how do you solve this? Sin x plus sin 2x plus sin 3x, and obviously it is in the mod. So ये अच्छा question बन जाता है because in this question you have to define the mod as well, right? ठीक है. But एक important aspect है before using anything, ये इसको अगर बहुत basic NCERT से relate करोगे तो NCERT में एक formula भी दिया हुआ है इस chapter में, sin c plus sin d which you can use sin x plus sin 3x, right? Okay, so you can write 0 to pi by 2 sin x plus sin 3x, right? Which is guys sin c plus sin d 2 sin c plus d by 2. यार मैं एक काम करता हूँ साइड में सॉल्व कर लेता हूँ पहले आप लोगों के लिए. So what is sin x plus sin 3x, guys? Sin c plus d by 2, 2 times sin c plus d by 2 into cos c minus d by 2. Okay, easy हो गया. Now, this is sin 2x cos x plus sin 2x, right, guys? Mod dx. Okay. Now, ultimately, guys, देखो आपको पता होना चाहिए तो mod xy को you can write as mod x into mod y. Is it true, guys? This is true, correct? Yes, sir. Mod can be is distributive in multiplication, right? So if what I'm trying to do over here is that if I take this sin 2x like this common, right, I would be remaining with 2 times of cos x plus 1, right? Correct, guys? Guys, remember the formula of cos 2 theta is 2 cos square theta minus 1, right? Okay. अच्छा वहां से लेकिन 2 cos x है तो बात नहीं बन पाएगी. हाँ ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट किसी को, एनीबॉडी? वैसे तो ये हो जाएगा अभी इजीली, काफी इतना डिफिकल्ट नहीं होगा क्योंकि नाउ आई कैन डू इट लाइक दिस. वी हैव sin 2x into cos x plus 1 का gi, राइट? सो sin 2x को आई कैन राइट 2 sin x cos x एक पार्ट के लिए, that will become 4 cos square x, right? Look at this, guys. Now if I write this as 2 sin x cos x, actually not for both the parts, wait a second. What I'm going to do is that I'm going to do sin 2x into 2 cos x like that plus sin 2x like this, right, guys? And also for anybody in this part, everybody clear, right? अच्छा एक बात बताओ, Yes, sir. 0 to pi by 2 में ये नंबर और ये नंबर क्या है, दो नंबर पॉजिटिव है? आर these both number positive, guys? Correct. Both positive. Mod, how do you define the mod, guys? Fx is mod fx is fx. If fx is positive and minus fx is negative. Ultimately, this all calculation we were doing just to define the mod, right? Okay, I have defined the mod now. So I'll remove the mod. I don't need that. And I'll be remaining with two parts. One part हो जाएगा इसका sin 2x dx, which is very easily solvable now. And if I write this sin 2 theta as 2 sin theta cos theta, I'll get 4 times of 2 sin theta cos theta, which means sin x into cos square x, right? Agree everybody on this part? Tell me. Sin 2x is cos 2x by 2 with a minus sign. Okay. And then to solve this part, I'll just very easily put cos x as t. Okay, so if I put cos x as t, I'll get sin x dx as dt minus sign or limit change हो जाएगा. So I have not included that minus sign in that, and this would become, guys, t square dt. Understood? Tell me. Yes, sir. बस हो गया, आंसर आ गया. So as I said कि difficulty level ओके था पेपर का. मैथ्स के क्वेश्चंस जेईई में इससे प्रीवियस ईयर्स में काफी अच्छे आए हैं. करेक्ट. सो फ्रॉम दिस
तो ये मुझे थोड़ा सा इजी ही लगा कंपैरेटिवली. करेक्ट? नोट Yes, कीजिए. sir. Okay then guys, let's quickly move. Let me check that, Shahir. Give me a second. Yes, Shahir. वो उसकी रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी ना शायद. Without that only we solved it, right? Yes, sir. So Shahir was saying the property where we break the limits, right? तो एक्चुअल में ब्रेक लिमिट करने की जरूरत पड़ती है अगर मॉड डिफाइन करना पड़ता तो. पर हमें मॉड डिफाइन करने का जरूरत ही नहीं पड़ा अपने ज्यादा. करेक्ट? एंड वी सॉल्व इट डायरेक्टली. ओके, लेट्स मूव फॉरवर्ड देन. Yes, sir. एक क्वेश्चन आया था पेयर ऑफ टेंजेंट्स पे, जो मुझे मिला है सर्कल चैप्टर का. आई एम नॉट प्रीटी श्योर बट थोड़ा स्केप्टिकल हूं, बट ये क्वेश्चन है ऐसा कुछ बच्चों ने बोला है. सो कैन यू कंफर्म दिस? Sir, I Vyom, think it was there. I'm not sure. okay, no problem. The locus of point of intersection of tangent drawn to the circle which subtends an angle of 120 degree. इसका मतलब क्या है? इस पे समझ लेते हैं क्वेश्चन एग्जैक्टली बोलना क्या चाहता है. The question is trying to tell you is that there is a circle, okay, and tangents are drawn on this circle. Correct? The locus of point of intersection. So wherever the tangents are meeting, this point P, we have to find the locus of this point P, H comma K, such that the center of circle is 2 comma 3. Radius is obviously 4 units. The radius is, guys, 4 units. Okay, which subtend an angle of 120 degree. Which subtends an angle of 120 degree. तो ये जो एंगल होगा ये 120 होना चाहिए. Okay, and if this angle is 120 degree, तो हाँ अगर हम इसको गाइस आपको याद है क्या ग्रेड 9th में आपने पढ़ा था इनफैक्ट कि if you just draw it like that, this triangle PAO and triangle PBO are congruent triangles. Okay, Yes, because sir. length of tangent same होती है and then radius है तो SAS congruency you can apply in fact. तो ये angle 60 है obviously and this angle is in that case also 60 degrees, right? Correct? So locus निकालना है चूंकि तो question काफी easy हो जाएगा from that perspective. ये 90 degree है guys. Okay, so if you see the value of sin 60 degrees, how much? That is 4 upon OP, right? Correct guys? है ना? Sin 60 is 4 upon OP, isn't it? Sin 60 होता है root 3 by 2. Correct? Yes, So sir. root 3 by 2, if I put the value, I'll get 4 OP. So I'll get, guys, OP square equals to, 3 OP square equals to 864. Correct? Yeah? अब OP square क्या है, guys? OP square is basically H minus 2 का whole square plus K minus 3 का whole square. That's it. आ गया आंसर. And that is equal to 64, right? So answer 3x square आ रहा है. यहाँ पे we can see very easily. It is 3x square plus 3y square minus 12x, okay, minus 18y, okay, और 9 and 4 13, 13 3 जा 39, 39 तो मतलब minus 25, right? Minus 25 equal to 0. This is your answer, right? Okay guys, understood? 3x square plus 3y square minus 12x minus 18y minus 25, which means option number 1. Anybody, any doubt? गाइस सबसे No, no. इंपॉर्टेंट ये है जो ये जो बेसिकली जेई का ना एक बड़ा स्पेसिफिक वो रहा है कि दे रिपीट द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, राइट? ओके, बिकॉज दे रिपीट द सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन अगेन एंड अगेन, so that is the very very important reason that you should definitely see ki what kind of question was asked today. Okay, because maybe tomorrow you might see similar kind of question in your paper as well. Okay, understood? Not possible. Like the same type of questions coming in the same year. सेम टाइप, यस. क्या बात कर रहे हो? सेम टाइप तो बिल्कुल आता है. सेम टाइप बोला है, सेम क्वेश्चन थोड़ी ना आएगा. सेम टाइप आता है, सेम टाइप तो आता है, यस. यू डोंट बिलीव दैट? No, like I saw the previous year PRQs. I didn't see many similar questions. No.
तो जेई का एक बड़ा स्पेसिफिक वो है कि इफ दे आस्क वन काइंड ऑफ क्वेश्चन, वो हमेशा उस काइंड के क्वेश्चन, देखो जस्ट थिंक अबाउट इट लॉजिकली, जे वुड ट्राई टू मेक द मेंटेन ट्राई टू मेंटेन द लेवल ऑफ द पेपर, राइट? करेक्ट? हाउ डू यू मेंटेन दैट? थिंक अबाउट इट ना। Yes, sir. एंड ऐसा नहीं है, थोड़ा सा यहाँ पे आई वुड डिसएग्री विद यू कि सेम टाइप के क्वेश्चन यार ऐसा नहीं पूछते हैं। पूछते हैं यार, वो बिल्कुल पूछते हैं। जैसे प्रीवियस ईयर में हमने देखा है, प्रीवियस ईयर्स के पेपर्स में हमने देखा है कि वो एडजॉइंट, जैसे एग्जांपल मैं तुमको दिखा देता हूँ इनफैक्ट, वन एग्जांपल। सो इफ यू सी, ये लास्ट ईयर का 20 to 25 का, राइट? कुछ पीवाई क्यूज है। जैसे वो लास्ट ईयर वो एडजॉइंट पे बहुत ज्यादा बेसिकली इमोशनल हो गए थे। तो जैसे यहाँ पे ये क्वेश्चन है या ये क्वेश्चन है, ये सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, राइट? कि एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए क्या होता है? जैसे एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट डिटरमिनेंट ए पावर n माइनस वन, राइट? या एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट इज डिटरमिनेंट ऑफ ए पावर n माइनस वन का स्क्वायर, राइट? सो दे आर द सेम प्रॉपर्टी क्वेश्चन, करेक्ट है ना? Yes, sir. और जैसे अगर एक बार क्रैमर रूल पूछना स्टार्ट करेंगे, सो दे विल आस्क मल्टीपल क्वेश्चंस फ्रॉम क्रैमर रूल। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? सो ऐसा है, Yes, एक्चुअल में sir. ऐसा है। इनफैक्ट लास्ट ईयर हमने ये भी नोटिस किया, एक बहुत सिंपल सी प्रॉपर्टी है स्क्यू लाइंस की, राइट? शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, राइट? करेक्ट? तो उन्होंने शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइन के 3-4 क्वेश्चन पूछ डाले, इधर थोड़ा बहुत घुमा के। फॉर्मूला उसके अंदर शॉर्टेज डिस्टेंस का यूज हो रहा था, करेक्ट? तो आई वुड डेफिनेटली हाईली रिकमेंड कि आप जो है थोड़ा सा देख लें, क्योंकि ऐसा होता है, सच में ऐसा होता है कि वो जो है सेम टाइप के क्वेश्चन पे एक बार जब पूछना स्टार्ट करते हैं तो उसके इर्द गिर्द पूछ लेते हैं, नियर बाय टू दैट दे आस्क द क्वेश्चंस, राइट? ओके। सो इन फैक्ट जैसे मैं अभी शॉर्टेज डिस्टेंस के बारे में बात कर रहा था, राइट? सो आई रिमेम्बर 2025 में अप्रैल अटेम्प्ट में ही शायद 3 या 4 क्वेश्चन थे वो शॉर्टेज डिस्टेंस पे ही थे। ओके, एक बार आप लोग चेक करिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो यू रियलाइज दैट, राइट? इनफैक्ट एक सेकंड रुकिए, अगर इफ आई मे हैव दैट आई कैन शेयर विद यू। मुझे वो पीवाई वाला सेक्शन मिल नहीं रहा है, बट एक बार चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है? एनीवेज, एक क्वेश्चन ये था, ये शायद इंटीजर टाइप में था क्वेश्चन, एज फार एज आई गॉट टू नो। एंड एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0, और उसने इसका कुछ वैल्यू पूछा था। एंड दिस इज आई थिंक अगेन अ वेरी वेरी इजी क्वेश्चन, बिकॉज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 को जब देख के अगर ये चमक जाता है कि ये ओमेगा है, तो देन ये क्वेश्चन खत्म है, फिर तो क्वेश्चन कुछ बचता ही नहीं है, राइट? ओके, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू 0 है, तो एक्स का यहाँ पे ओमेगा आ गया, एंड वंस इट इज ओमेगा देन तो कोई बड़ी बात नहीं है, omega plus 1 by omega, right? So guys, 1 by omega would be this. Actually, this is, if you see, this is omega plus omega square, क्योंकि 1 by omega is omega square, right? Power 4। फिर ये हमारे पास गाइस है ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 by ओमेगा स्क्वायर, दैट इज अगेन ओमेगा, उसका होल पावर 4। इफ यू सी ओमेगा, हाँ यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ओमेगा क्यूब प्लस 1 by ओमेगा क्यूब, क्योंकि ओमेगा क्यूब तो 2 होता है, तो 2 पावर 4 लिखा है अगले टर्म में। इफ आई डोंट नीड टू सॉल्व दो फर्दर, बट एक बार बता देता हूँ फिर फटाफट से। नेक्स्ट क्योंकि आएगा इस ओमेगा पावर 4 प्लस 1 का ओमेगा पावर 4, ओके, दिस इज अगेन ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा ओनली, ओके, दैट इज अगेन ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर होल पावर 4, और फिर अगेन आएगा ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा होल पावर 4। सो अल्टीमेटली इफ यू सी गाइस की फर्स्ट 3 टर्म जो आएगी, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा इज -1 पावर 4 इज 1, सो ये 1 है, ये 1 है, 1 प्लस 1 2, एंड 2 पावर 4 इज 16, सो ये 18 हो गया, राइट? सो फर्स्ट 3 टर्म्स का सम जो है वो 18 है, फर्स्ट 3 टर्म्स का जो सम है वो 18 है, राइट? सो 24 तक 18 आ जाएगा मेरे पास 8 टाइम्स, एंड फिर लास्ट में बचेगा ओमेगा पावर अगेन ये ओमेगा प्लस 1 बाय ओमेगा फिर से बच जाएगा, विच इज अगेन इक्वल्स टू 1। तो द आंसर इज 18 टाइम्स 8 प्लस 1, ओके, 145। अंडरस्टूड? Yes, sir. या कोई डाउट है किसी को? एनीबॉडी? No, sir. नो? ओके। एक और क्वेश्चन जो इंटीजर टाइप में आई हैव गॉट टू नो वाज दिस वन, और हियर दिस, द सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस, ये तो मतलब बहुत ही अनबिलीवेबल सा लगा मुझे ऑनेस्टली, कि x माइनस वन का वैल्यू टी पुट किया, राइट? तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 5t प्लस 6 इक्वल टू 0, टी कैन बी इधर 2 और 3,
So x minus 1 का mod equal to 2. तो प्लस माइनस 2 प्लस 1 करेंगे तो 2 + 1 3 हो जाएगा और माइनस 2 + 1 -1 हो जाएगा. एंड x minus 1 का mod equal to 3 करेंगे तो 3 + 1 4 हो जाएगा. And -3 + 1 would be -2, right? So these are the 4 answers which was there. ये तो काफी ज्यादा honestly unbelievable लगा कि ऐसा क्वेश्चन चाहिए में आया है. Very basic. Okay, very basic, absolutely correct. So guys, abhi today I just had these questions only. Okay, so I'll just quickly solve them, right? But that from tomorrow onwards, I'll try. From not tomorrow actually, 23rd. So I will try to get more questions, and then I'll be coming, very early. आज तो काफी लेट हो गया, राइट? तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी. इनफैक्ट आई ट्राई कि मॉर्निंग शिफ्ट के लिए अलग एंड इवनिंग शिफ्ट के अलग हम लोग लाइव आके वी कैन डिस्कस इवन फॉर द अदर सब्जेक्ट्स एज वेल, राइट? ओके, सो फॉर टुडे इट इज दिस, दैट्स इट, राइट? And I'll keep you updated on the WhatsApp groups as well for the same, that what kind of paper is coming, what is the level of the paper. If you guys have any doubts in any question, just ping me on WhatsApp for the same, right? Okay. Yes, Shai, for sure. I can explain this again. So for this one, Shahid, I just put mod of x minus 1 is t. Okay. And once I put that, after this, I got the equation t square minus 5t plus 6 equal to 0. From this, t can be either equal to 2 or 3. So t was mod of x minus 1. I equated it to 2 and 3. And then because mod, I can open with plus minus sign. So I got four values of x, 4, 3, -1 and -2, right? Understood? So, sir, Shlok, for chemistry and physics also, teachers would come online. I'll inform you that on the WhatsApp group. Finally, he asked to find the sum of the roots, right? So that is 7 minus 3, the answer is 4, right? Finally, he asked you to find the sum of all the roots. So we got 4 roots here. One is 3, one is -1, one is 4, and one is -2. If you add all of them, the answer is going to be 4, right? Okay, sir. Understood? Yes, sir. Okay. Thank you, sir. Okay then, guys, it was nice meeting you, and thank you very much for joining. And as I said, that chemistry and physics sirs also will come quickly online and we discuss the paper, right? Once they're free from their classes and all, right? Okay. Chalo. Bye bye. Take care, everybody. Thank you. All the Thank best you. for your exam. Thank you. Goodbye. Thank you. Bye bye.